Research design is simply a plan for a study. It is a plan lays out the way entire research would be done and carried out, specified the method and procedure for the collecting, the analyzing the needed information. So it can be carried out a blueprint of the study. A major issue in research preparation of the research design decision regarding the what, where, the when, how and how much by the mean concerning an inquiry and research study constitute a research design. Research design, according to Caldwell and Hurst, can be explained as a strategy and plan which purpose of study is to plan and realize. Let us take an example. When a company feels that it requires additional capital or expansion of its plant, it first need to look at a various source of the capital, also future expected return for the project. There is no point in approaching a financial institution or mm, issuing a share even debenture before the uncertain facts. Various factors need to be considered as to be estimated cash inflow from the project, the cost of capital mix and capital repaying the ability. Until it is done, one cannot plan a proper source of capital. Similarly, research need to be done, design or structure before data collection analysis can commence. The function of research design is to ensure that the evidence obtained enable one to answer the initial question or ambiguously as possible. This can be by the clarity, subtleties, and research method in a social science, wherein assert arrangement of the condition for a collection analysis of data in the manner that aims to combine relevance to research purpose to economy and procedure. So the research design would be mainly contain a sample design explaining the way sample size and arrived at all, how would be selected, example बेनिफिट्स. अभी हमें जो है रिसर्च डिज़ाइन यहाँ पर जो बताया गया है कि सिंपल है, मतलब एक प्लान है, हमें यहाँ पर प्लान करना है कैसे मतलब एक तरीके से कोई भी रिसर्च करने के लिए. रिसर्च डिज़ाइन को समझने के लिए पहले हमें जो है वहाँ पर बेनिफिट्स समझने होंगे. बेनिफिट्स क्या हैं कि रिसर्च गिवन बिलो फ्यू बेनिफिट्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन देते हैं. सबसे पहले तो यहाँ पर स्टडी हेल्प्स टू रिसर्च डिज़ाइन विच हेल्प्स टू ब्रिज बिटवीन व्हाट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड और व्हाट टू बी डन. मतलब एस्टेब्लिश्ड और यहाँ पर एक तरीके से एस्टेब्लिश्ड और व्हाट टू बी डन हमें समझना होगा. सेकंड है, हमें जो है यहाँ पर रिसर्च डिज़ाइन फैसिलिटेट टू रिसर्चर टू अंडरस्टैंड एंड डिसाइड व्हाट डेटा नीडेड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव. यहाँ पर अंडरस्टैंड एंड डिसाइड व्हाट डेटा. तो written design helps the exactly in clear terms what to be done and why. What to be done and why. फोर्थ होता है कि इट हेल्प्स रिसर्चर टू कीप कंप्यूटेशन एंड थिंकिंग ऑन द पाथ टू सॉल्यूशन एंड रिकमेंडेशन. सॉल्यूशन और जो है रिकमेंडेशन. पांचवा जो है और गाइड रिसर्चर हाउ टू कंडक्ट रिसर्च. मतलब रिसर्च.
So types of research design, there are two type of research design mainly, namely जो है exploratory and conclusive research. Exploratory research is type of research conducted for a problem that has been clearly defined. अच्छा, हमें जो भी डिज़ाइन मतलब सॉरी जो भी एक तरीके से प्रॉब्लम सामने दिख रही है तो उस प्रॉब्लम के रिसर्च को हमें एक्सप्लोर करना है, मतलब उसको एक्सप्लोरेटरी जो है यहाँ पर डिज़ाइन करेंगे. इट हेल्प्स डिटरमाइनिंग दी बेस्ट रिसर्च डिज़ाइन और डेटा कलेक्शन मेथड जो है यहाँ पर selection of the subject. It provide relevant variable need to be considered. The research method are flexible, qualitative, and unstructured. The researcher this method is all does not know what he will find. और ओह सॉरी, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो हमें प्रॉब्लम क्लियरली नहीं पता हो, तो यहाँ पर ये मेथड जो है रिसर्चर का दूसरे तरह से ये न जाना जाता है कि व्हाट ही विल फाइंड, मतलब यहाँ पर हमें नहीं पता है, हम बस एक तरीके से विदाउट एनी मतलब एक्सप्लोर करना है. तो अभी समझ में आया कि एक्सप्लोर और एक तरीके से अनडिफाइंड टारगेट है. तो कॉन्क्लूसिव रिसर्च में क्या है, डिज़ाइन इज़ मोर फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड एंड कंपेयर टू एक्सप्लोरेटरी. Research design helps in understanding our relationship between the variable and this research helps in decision. तो यहाँ पर टाइप ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, डिज़ाइन को समझना है. सबसे पहले तो हमारे पास में एक्सप्लोरेटरी डिज़ाइन है, दूसरा हमारे पास में है कॉन्क्लूसिव. एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को और ज़्यादा डिटेल में समझना है. Now we will understand the type of research design. फर्स्ट ऑफ ऑल रिसर्च डिज़ाइन एक्सप्लोरेटरी और कंक्लूसिव हमने बताया. तो एक्सप्लोरेटरी समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा यहाँ पर एक्सप्लोरेटरी डिज़ाइन समझने के लिए कि अंडरस्टैंड द रिसर्च इनफॉर्मल रिसर्च अंडरटेकन द ऑब्जेक्टिव टू गेन द बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द जनरल नेचर एंड रिसर्च मेजर एम्फेसिस ऑन द कन्वर्टिंग बोर्ड वेग्यू प्रॉब्लम statement into small precise sub problem and statement. It has been great amount of flexibility, does not does not off does not offer any clear hypothesis about the problem. It is generally followed by the confirmatory research because it gives a feel of various relevant issues. The result of research can be give some indication as the why and how and when something occurs. यहाँ पर जो है ये जो देगा why, how and when, और कॉन्क्लूसिव जो है हाउ और इट कैन नॉट एक्सप्लेन जो है यहाँ पर हाउ ऑफन एंड हाउ मैनी. तो यहाँ पर इट इज़ एंड जनरेट बेसिक नॉलेज क्लियरिटी रिलेवेंट इश्यूज अनकवर वेरिएबल एसोसिएटेड with a problem, uncover information need or define alternative addressing research and objective. In early stage of research, one usually lack of sufficient understanding of problem in order to formulate a specific hypothesis. Further, there are क्या हो गया, कैसे हो गया भाई.
Now we will understand. Will continue the next. It designed to generate basic knowledge, clarify relevant issues, uncover variable associated with the problem, uncover information needs, and define alternative addressing research objective. In early stage of research, one usually lack of sufficient understanding of problem in order to formulate a specific hypothesis. Further, there are often several tentative explanations. Let us take a scenario where the company top management asks about the dropping sales and product movement. Few feedback is received where the sales are down because of our price too high. Our dealers and sellers representative are not doing a good job. Our advertisement is weak. So now scenarios from the statement very little information is available is to point out what is the actual case of the problem. The major purpose of explanatory research is to identify problem more especially, and therefore exploratory studies used to initiate a stage of research. Given below are some are uses of exploratory research: formulating. Given the below some uses exploratory research: formulating a problem, defining the problem more precisely. मतलब हमें जो है कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको अच्छे से, और आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ द एक्शन, हमें जो कोर्स ऑफ एक्शन को जानना पड़ेगा. डेवलपिंग हिपोथेसिस एंड आइसोलेटिंग की वेरिएबल एंड रिलेशनशिप फर्दर एग्जामिनेशन, and gaining the insights for developing an approach to the problem, establishing priorities for further research. The following are circumstances in which exploratory study would be ideally suited: to gain an insight into a problem, to list out the possibility which can prioritize possibility which seem likely, to develop a hypothesis. It can also be used to increase the analyst familiarity with the problem, particularly when the analyst is new problem era. Example: a marketer researcher working for a company for the first time. Exploratory studies may be used to clarify concept and helps in formulating precise problem. To pre-test a draft questionnaires. In general, exploratory research is appropriate to any problem about which very little is known, as research is foundation for any future study. Given below some characteristic exploratory research. Exploratory research is often front end of total research design. It is a flexible, unstructured, or very versatile. And experimentation is not a requirement. Cost incurred to conduct a study is very low. This type of research allows very wide exploration of view. Research is interactive in nature and also in open-ended. Hypothesis and development hypothesis development at exploratory research stage में हमें समझना है. Exploratory stage, sometime it if a situation is being investigated for a first time, it may be possible to develop any hypothesis at all. This because non availability any precious data. Sometimes some information may be available, it may be possible to formulate tentatively hypothesis. In order to case most of the data is available, it may be possible to provide answer to the problem. Example given below indicate each about the type, research purpose, what product feature stated will be most effective in the advertisement. मतलब यहाँ पर हमें एक तरीके से मतलब एग्जांपल इंडिकेट अबव ईच अबव टाइप: रिसर्च पर्पस, रिसर्च क्वेश्चन और हिपोथेसिस.
मतलब एक तरीके से इस चीज़ को समझाए एक उसके ज़रिए कि रिसर्च का क्या पर्पस होना चाहिए, रिसर्च क्वेश्चंस क्या है, हिपोथेसिस क्या है। पर्पस समझना है कि व्हाट प्रोडक्ट फीचर इफ स्टेटेड विल बी मोस्ट इफेक्टिव इन द एडवर्टाइजमेंट। मतलब हमें आपको अगर ये बताना है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है तो उसके फीचर्स कौन से अच्छे हैं वो हमें बताना रहेगा एक तरीके से। अगर व्हाट न्यू पैकेजिंग इज़ टू बी डेवलप्ड बाय द कंपनी तो वो हमें सॉफ्ट ड्रिंक के बारे में तो हमें वो देखना होगा। हाउ कैन इंश्योरेंस सर्विस इंश्योरेंस सर्विस इम्प्रूव जो है इम्प्रूव्ड यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है। रिसर्च क्वेश्चंस व्हाट बेनिफिट डू पीपल ड्राइव फ्रॉम द एड अपील जो है बेनिफिट्स क्या होने चाहिए। व्हाट अल्टरनेटिव एग्जिस्ट टू प्रोवाइड अ कंटेनर फॉर सॉफ्ट ड्रिंक एंड रिसर्च क्वेश्चंस जो आएंगे उठ के यहाँ पर कि इसको एड अपील को कैसे लेंगे और बेनिफिट्स को, और अल्टरनेटिव एग्जिस्ट टू प्रोवाइड कंटेनर सॉफ्ट ड्रिंक को कैसे होना चाहिए। व्हाट नेचर कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन, तो हमें जो है यहाँ पर कस्टमर के डिससेटिस्फेक्शन को देखना पड़ेगा। हिपोथेसिस नो हिपोथेसिस फॉर्मुलेटेड इज पॉसिबल, पेपर कप अप विद बेटर देन एनी अदर फॉर्म सच एज बोटल, और impersonalization is the problem. In example 1, research question is posed to determine what benefit do people seek from the ad. Since no previous research is done on the consumer benefit and for this product, it is not possible to form any hypothesis. तो यहाँ पर पोस्ट किया गया कि व्हाट बेनिफिट डू पीपल सीक फॉर द एड, तो यहाँ पर नो प्रीवियस रिसर्च इज डन कंज्यूमर बेनिफिट फॉर द प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल फ्रॉम हिपोथेसिस। एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल दिया है कि सम इंफॉर्मेशन इज करेंटली अवेलेबल अबाउट द पैकेजिंग एंड सॉफ्ट ड्रिंक हियर इज इट इज पॉसिबल फॉर्मुलेट अ hypothesis which is purely tentative. Hypothesis formulated here may be some on several alternative available. एग्जाम्पल 3 में बताया है कि द रूट केस ऑफ द कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन इज नाउन lack of personalized service in case it is possible to verify whatever is the case or not. अब एक्सप्लोरेटरी रिसर्च मेथड में जो है सबसे पहले तो हमें ये मतलब समझना होगा कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की जब बात कर रहे हैं तो उसको एक तरीके से हमें समझते हुए यहाँ पर कुछ उसके टाइप है। लिटरेचर सर्च है, लिटरेचर सर्च है, और एक्सपीरियंस सर्वे है, और फोकस ग्रुप है, और एक तरीके से यहाँ पर फोकस ग्रुप है और केस स्टडीज़ है। केस स्टडीज़ हैं तो हम यहाँ पर जो है सबसे पहले तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को समझते हैं, जिसमें सबसे पहला जो देख लिया हमने कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च मेथड में क्या है कि क्विकेस्ट चीपेस्ट वे टू फॉर्मुलेट हिपोथेसिस इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च आर दे आर यूजिंग एनी फोर मेथड, इनमें से कोई भी एक मेथड। लिटरेचर सर्च द रेफर्स रेफरिंग टू लिटरेचर डेवलप न्यू हिपोथेसिस, द लिटरेचर रेफर टू बी ट्रेड जनरल प्रोफेशनल जनरल research finding the publications and statistical publication examples support the problem to why are the sale down. These can quick to be analyzed with the help of published data. Why should indicate whether the problem is industry problem or firm problem. हमें यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि मतलब ये प्रॉब्लम इंडिविजुअल है कि ये मतलब कॉमन प्रॉब्लम है। फॉलोइंग द क्वेश्चन हेल्प द रिवाइज द लिटरेचर, हमें यहाँ पर इस प्रॉब्लम को समझने के लिए हमें एक तरीके से वापस से रिवाइज करना पड़ेगा कि चीज़ें कहाँ पर गड़बड़ाई है।
तो यहाँ पर what are the previous reveal about the problem, what is the theoretical framework for the investigation, and are the complementary. What are the theoretical framework? What does the previous research reveal about the problem? What is the theoretical framework for investigation? Are the complementary and competitive theoretical framework? And what are the hypothesis research questions have emerged from the literature review? तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट सर्वे में ये निकल के ये तो हमारा हो गया लिटरेचर सर्च के बारे में। और एक्सपीरियंस सर्वे अगर हमें करना है तो एक्सपीरियंस सर्वे में क्या क्या चीज़ें हैं वो हम समझते हैं कि experience survey is desirable to talk the person who well informed the era in investigated included intervening in the people who having the experience in era of study to their memories experience. There is no questionnaire is required. The approach adopted in experience survey should be highly unstructured so that respondent can give divergent view since the ideas using the experience survey to undermake problem and a formulation note to conclusion probability sample need not to be used. Example, a group of housewife may be approached for their choice for ready to cook product. हाँ, ये पूछ सकते हैं कि रेडी टू कुक प्रोडक्ट क्या हो सकता है। और पब्लिशर माइट वांट टू फाइंड आउट द रीजन फॉर पुअर सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर इंट्रोड्यूस रिसेंटली। ही माइट मीट न्यूज़पेपर सेलर, पब्लिक रीडिंग रूम एंड जनरल पब्लिक एंड बिजनेस कम्युनिटी। तो यहाँ पर कुल मिलाकर हम उसी बंदे को पकड़ रहे हैं जो मतलब एक्सपीरियंसड है। गिवन दी सम इन्वेस्टिगेशन क्वेश्चंस आर दी what being done and what has been tried in past without success, or which with success, how have things changed and what are the change producing element of the situation, who is involved in the decision, what role does the each person play, what are the problem areas and barriers under the study, whom can be count on the assist and participant in research, what are the priorities areas. Focus group, another widely used technique is exploratory research is focus group. हमें देखना पड़ेगा is the focus group in the panel of the people invited to discussion about the specific topic, and discussion is coordinated by the moderator, and he guide the facilities and group to exchange ideas, feelings and experiences on the topic. The group usually consists of 8 to 12 persons. While selecting the group, one must make the sure that they have a common background with relevant to this research. Normally, there are 4 to 5 groups. There are maybe even 6 to 8 groups, and guiding the criteria is to whether the latter group are generated the additional ideas and repeating the same respect to subject under this study. When these shows diminishing return in the group and discussion is stopped, a typical focus group session lasts between the 1.5 or 2 hour. Moderator under the focus group has a key his job to guide group to proceed and in the right direction. A moderator facilitator and should be possessing the following characteristic, like we can we are understanding the focus group, तो हमें यहाँ पर facilitator should be वो possess करे कि following listening, permissive memory and encouragement and learning, sensitivity, intelligent and kind and firm. Listening, he must have a good listening ability, and moderator must not miss the participant comment and due to lack of attention. Permissive, the moderator must be permissive, you yet alert to be signed. The group is the disintegrating memory, he must have good memory. The moderator must able to remember comment of the participant. Example, discussion center around a new advertisement by the telecom company. Participant may make a statement early, make another statement later, which opposite to what said earlier. Example, participant
may make a statement early, make another statement later, opposite to what are the said earlier. मतलब क्या कहा गया? Example, participant may say never subscribe to views expressed in the advertisement by competitor, but subsequently say the current advertisement competitor is excellent. Encouragement, moderator must encourage in responsive member to participant. And learning, he should be quick learner. Sensitivity, moderator must be sensitive enough to guide group discussion. And intelligent, he must be person whose intelligence is above the average. Kind, firm, he must combine the detachment with empathy. केस स्टडीज़ नाउ एक्सप्लोरेटरी, अगर रिसर्च को हमें समझना है तो केस स्टडीज़ को भी, कि केस रेफर्स टू यूनिट एनालिसिस टॉपिक चूजन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम. केस स्टडीज़ आर often used to provide context to other data, offering a more complete picture of what happened in program. The excel making understand complete issue, even the aid strength to what is already known through the previous research. Case emphasize studies emphasize detailed contextual analysis, limited number of event or condition, their relationship. Robert K. Yin defined the case study research method, empirical inquiries that investigation contemporary phenomena within the real life context. When the multiple source of evidence are used, case study well suited the carry out the exploratory research. However, the result investigation of the case history is always considered suggestive and rather than conclusive. Case studies are often used to providing context other data, offering a more complete picture of the what happened program and why. Now we will understand the conclusive research. मतलब conclusive research design helps to test यहाँ पर जो है hypothesis and examine relation between the variable and prime purpose of conclusive research, also known as confirmatory research. मतलब confirmation भी साथ के साथ it helps decision making, determining, evaluating the choosing and the best course of action in situation. it aid it aids the decision maker in selecting a specific course of action, verifying the insights. It is useful especially when the decision maker already in mind had one or more alternative. It is especially looking for information and pertinent evaluating them. The major emphasis of the course and conclusive research is to evaluate and establishing reliability and of the relevant data. It seeks data that can be expressed in number, therefore it can be analyzed using the quantitative process. Since data requirements are clearly specified in situation calling for the conclusive research, since such research is intended and add in the first stage of the decision marking process. Conclusive research is typically more formal, rigorous, and then exploratory research. It clearly defined the objective with the specific course of action. Conclusive research is of two types. First is descriptive research. The name itself reveals that essentially research to describe something. Descriptive research studies are those studies which are concerned with describing the characteristic of the particular individual or of group. Example, it can describe the characteristic of group as customer, organization, and market. Descriptive research provide association between two variable like income, places of shopping, age, preference. What descriptive research can not indicate is that it cannot establish a case or effect relationship between the characteristic of interest. This distinct disadvantage or descriptive research. Descriptive study require a clear specification who, want, when, where, why, how. The research example consideration situation convenience store planning to open new outlet. The company wants to determine how people come to prioritize new outlets. Some of the questions need to be answered before the data collection for these descriptive studies are follows. Who, unit of the analysis कौन कर रहा है, and what information need from the respondent, when information should be obtained before the shopping and after shopping, and where respondent should be contacted, why
why we are getting the information from the respondent way, how to get information questionnaire survey. तो हमें who, what, when, where, why, who, what, when, where, why, वे हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा. तो hypothesis study at descriptive research stage, ये हमें जो है एक तरीके से देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट प्रॉब्लम एंड रिसर्च प्रॉब्लम और हिपोथेसिस को उसके वे में समझे. हाउ शुड अ न्यू प्रोडक्ट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड व्हाट विल बी टारगेट सेगमेंट. एंड रिसर्च प्रॉब्लम में वेयर डू कस्टमर बाय अ सिमिलर प्रोडक्ट राइट नाउ एंड व्हाट काइंड ऑफ पीपल बाय द प्रोडक्ट नाउ. हिपोथेसिस में अपर क्लास बायर यूज शॉपर और स्टॉप एंड मिडिल क्लास बायर बाय अ लोकल डिपार्टमेंट. Senior citizen buy a product or youngster married by competitor products. Descriptive research is to describe the characteristic or relevant group such consumer and salespeople, organization or market areas, and to estimate percentage unit specified population exhibits a certain behavior to determine perception of a product to determine degree to which marketing variables associated to make the specific prediction. The data collected in form of direct or indirect question will depend upon the nature, research questions and frame of the study, available fund kind of respondent. There are two type of descriptive research. Now in next video we will understand method for the descriptive research will be for longitudinal design or cross sectional study.